My dear students, while discussing the discipline of management and how the different management thoughts are emerging around the 70s and 80s, and we are into the 90s now, economic theories, behavioral theories, psychology theories, sociology theories, all of these theories are affecting the discipline of management. That's why management discipline, you have principles from physics and mathematics. You call it operation research or management science. But then you also learn from psychology, sociology, and other disciplines, even political science and medical science. Sociology, and especially action research in sociology, and especially the way Professor Agres and Professor Schoen and Professor Peter Sanjay, all of them from MIT. And MIT is a very well-known university, and the concepts which are presented by them are well taken by the management scholars. They came up with the concept of learning from the environment. And it is now well accepted that yes, environment is affecting. So how should one learn? They came with the concept of single loop learning versus double loop learning. What does that mean? Single loop learning means you have input, throughput, output, right? Materials are being used, a process is being followed, products are being made. Now, in the feedback, you look at the throughput, speed of the throughput, time of the throughput, efficiency of the throughput, and you look at the units being made, and through the feedback, you adjust the input. So in other words, the feedback loop is a single loop learning. क्वालिटी मैनेजमेंट में जिसको आप कहते हैं करेक्टिव एक्शन, एडजस्टमेंट, ट्यूनिंग. पॉलिसी आपने चेंज नहीं की, प्रोसीजर आपने चेंज नहीं किया, प्रोसेस आपने चेंज नहीं किया, अजम्पशंस को आपने चेंज नहीं किया, कुछ नहीं किया, आपने करेक्टिव एक्शन लिया, सिर्फ ट्यूनिंग उसकी कर दी. That's single loop learning. So feedback mechanism gives you a single loop learning, and according to that learning process follows, it's a basic type of learning, and whether it's the organization level or at the individual level, there are changes, behavioral changes, behavior of the machine, behavior of the production, behavior of the assembly line, behavior of the individual. सब पे अप्लाई होता है ये प्रिंसिपल, सिंगल लूप लर्निंग. वो जो कहते हैं ना उर्दू में कि दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है. छाछ कहते हैं लस्सी को, योगर्ट, लबन. जला तो दूध से है. अब दूध वाइट कलर का लिक्विड है, लस्सी, लबन, वो भी व्हाइट कलर का लिक्विड है ना. तो फीडबैक उसको ये मिला कि भाई जरा एहतियात से. तो सिंगल लूप लर्निंग में आप फीडबैक के जरिए से लर्न करके कंट्रोल करते हैं प्रोसेस को. डबल लूप लर्निंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. इन डबल लूप लर्निंग you challenge the assumptions. You challenge and question the policies you made. You challenge the belief on which the strategy was being formulated. You question them. Strategies and policies are at the thought level. So you're questioning your thoughts, which are actually producing the process. Am I right or not? Policy gives strategy. Strategy is followed by the structure. Structure
gives a process. Process gives procedures. Procedures produce actions. Actions gives output. So इस perspective के अंदर future decisions के लिए double loop learning means it focuses on the frame and assumptions which form the basis of your action. कि ये काम ठीक नहीं हो रहा था, ये प्रोडक्शन में वेस्ट ज्यादा हो रहा था, ये डिसीजन मेकिंग से नुकसान हो रहा था. Let me change my assumption, let me change my belief on the basis of which I made this decision. In the double loop learning, after identifying the errors, the organization rules and policies and objectives are re-examined and they are modified. आप स्टिक नहीं करते, रेजिस्ट नहीं करते, आप अपनी एजम्पशंस को चैलेंज होने से बचाते नहीं हैं, आप अपनी स्ट्रेटजीज को ओपन करते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी दिखाते हैं. और डबल लूप लर्निंग का मतलब यह है कि यू आर रेडी टू चेंज, यू आर रेडी टू थ्राइव, यू विल सर्वाइव. ऐसी कंपनियां जिन्होंने डबल लूप लर्निंग अडॉप्ट किया, जॉनसन एंड जॉनसन आफ्टर एक 100 साला जिंदगी के बाद आज भी जिंदा है. कोडक कैमरे की सेक्टर में टॉप का नाम था, गायब हो गया. नोकिया मोबाइल सेक्टर के अंदर टॉप का नाम था, गायब हो गया. वो इंडिविजुअल जो चेंज नहीं होते, वो इंडिविजुअल जो लर्न नहीं करते, वो ऑर्गेनाइजेशन जो लर्न नहीं करती, वो सर्वाइव नहीं करती. थैंक यू वेरी मच.